Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। अब से लेकर 7 बजे तक हम देश और दुनिया से ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन, नमस्कार, आपका स्वागत है। वेलकम उदयन। धन्यवाद, थैंक यू राजेश। और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं राजेश लेख। Prime Minister Narendra Modi announces extension of PM Garib Kalyan Ann Yojana till the end of November. Around 80 crore people to get free ration in the wake of COVID-19 pandemic. The output of 8 core infrastructure industries shrink by 23.4% in May due to the lockdown. And domestic equity benchmark log marginal losses even as global cues were positive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की। कोविड-19 महामारी के चलते लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। पूर्णबंदी के चलते 8 मूलभूत ढांचा उद्योगों का उत्पादन मई में 23.4% की गिरावट में रहा और घरेलू शेयर बाजार मामूली नुकसान पर बंद हुए, हालांकि वैश्विक संकेत सकारात्मक थे। Prime Minister Narendra Modi has announced the extension of PM Garib Kalyan Ann Yojana till the end of November. The scheme, announced in the wake of COVID-19 pandemic, provides free food grains to the people. Its extension will cost over 90,000 crore rupees. While addressing the nation this evening, Mr. Modi said 80 crore people will get free ration for 5 more months. Mr. Modi said, if one looks at the death rate due to corona, India is still in a very stable situation in the fight against COVID-19 as compared to other countries. The Prime Minister added that timely decisions and measures like lockdown has saved many lives. Mr. Modi, however, said ever since Unlock 1 started, people have shown negligence, urging people to take all necessary precautions for fighting coronavirus. He said during the lockdown, rules were strictly followed, but now the governments, local administration and citizens again have to show similar caution. He stressed the need to have a special focus on the containment zones. Mr. Modi asked everyone to follow health guidelines, saying, be it head of the village or Prime Minister, nobody is above rules. He also hailed farmers and honest taxpayers for their contribution in making the welfare scheme successful. Mr. Modi said the country is entering Unlock 2 and the season of cough, fever and cold is also about to start, and in such a situation the countrymen should take care of themselves. Udayan, what do you have to say about this very emotional plea that the Prime Minister made today on 2 fronts? One on the food grains distribution, which is going to cost 90,000 crore rupees to 80 crore people, and the second on the pandemic, urging people to take care of themselves. Well, Rajesh, what the Prime Minister has done is basically given a sense of a protection net which the government is going to be providing to the most vulnerable people. So that's roughly, I think, 800 million, if I'm not wrong. And that's a huge, this is possibly one of the biggest programs ever. So in terms of execution, if one does it, I mean, it's unparalleled. I mean, I cannot think of any time else in human history when something like this was done.
So the proof of the pudding will lie in eating, but and how well this is executed. But in terms of what's being envisioned and provided for, till November, we know for a fact that the government will be supporting the most vulnerable people. So that's number one. So even as his government is trying to protect that downside and that vulnerability, they're trying to give protection in terms of food. Because there's a large-scale disruption in terms of employment, etc. The other thing that he's trying to do is make sure that, again, there's no disruption in economic activity because of people, contracting infections, because of, negligence or not, being careful, etc. So on both the flanks are important. People who are getting impacted, they need to be protected. And people who are onto economic activity, they should not go out of circulation. So, as you rightly mentioned, Rajesh, if there's a containment zone, and there are lots of containment zones, what effectively is happening, your economic activity, you're not being able to come towards a near normal state. So these are the two areas that we need to be careful about, and he obviously has spoken out. जो एक बहुत ही बेसिक नीड होती है उसका पूरा ध्यान रखा है सरकार ने। इनफैक्ट 5 महीने के लिए 5 अतिरिक्त महीनों के लिए ये बढ़ाई है सुविधा निःशुल्क अन्न की। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या-क्या और चुनौतियां हैं? जैसे आपने कहा अभी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस उसको रिवाइव करने में क्या आपको मेजर चुनौतियां दिखाई दे रही हैं अनलॉक पीरियड में? देखिए सोनू, सबसे पहले जैसे कि आपकी कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहला जो फोकस कहिए चैलेंज कहिए कि हमारी जो ये खरीफ जो क्रॉप है, खरीफ में जो बुआई होगी, कटाई होगी, वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब चले। वो जितना कम उसमें मुश्किलें आई, जितना आप उसमें सपोर्ट कृषक जो हैं उनको किया जाए, और आपके जो भंडारण क्षमता है वहां पे फूड ग्रेन खाद्यान्न वहां पे पहुंचे, इसको बिल्कुल इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फूड सप्लाई ही हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है जो हमें ये इस महामारी को लड़ने में मदद करेगी। ये नंबर 1 है। नंबर 2 है, जहां जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम वापस ला सकते हैं वहां पे हम कोशिश करें। तो धीरे धीरे इसको खोलना पड़ेगा, एकदम से सारा हम नहीं खोल सकते, क्योंकि फिर हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे और 5 कदम पीछे जाएंगे। तो हमें इस तरीके से उसको अनलॉक करना पड़ेगा, हमें करना होगा कि हमें उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, हम एक तरफ ही मूव करें, पीछे ना आए। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कई आंकड़े हम, जैसे आपने खबरों में कुछ हेडलाइंस में भी पढ़ा, कई जगह में आंकड़े बताए जा रहे हैं कि वो पिछले साल या पिछले क्वार्टर के हिसाब से पीछे जा रहा है। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होना है। हमें ये देखना है पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने हम आगे बढ़े कि नहीं, अगले महीने में हम इस महीने से आगे हमें बढ़ना है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें इतना बुरा नहीं लगेगा जितना आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करने में जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम फोकस रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता इसमें हमारे देश में बहुत कैपेबिलिटी है और हम आगे बढ़ जाएंगे। Yeah, very rightfully the Prime Minister has mentioned about people have shown negligence. And if there is negligence, cases will not come down. Cases will not come down, then the economic activity will not happen, and then we will continue to be in the state that we are and not moving ahead. And therefore the appeal that the Prime Minister has made, that the cold and cough and fever, this season is coming, so take care of yourselves, because if you do, then you will be able to partner the Prime Minister and the nation in taking the economic activity forward. Don't you think so? Absolutely. And what I like, Rajesh, is he has very clearly pointed out the 2 drivers. I mean, he's mentioned the taxpayers, now tax and the farmers. And Rajesh, these would be the 2 entities who will be, playing a big role in the country coming back, the economy coming back on rails. Your taxpayers, obviously, if you want to pay taxes, then you'll have to have an economic activity going in, and that's where being careful about not contracting infection, not being lackadaisical about going about various things, being careful. Rajesh, it's not so only about being careful about ourselves. It's also about not making sure that everybody around us stays safe, and we don't do anything where somebody else suffers.
So that's number one. And number two being the farmers, because as I mentioned, the food security will be huge because we have such food grains, buffer stocks, etc. That is what is allowing us to, giving us a headroom to protect the most vulnerable amongst our Indian citizens. So we must maintain whatever strengths that we have and keep adding to our strength, and hopefully, with the kind of resilience and the kind of creativity that we have, we should be able to see this through. I don't think if there is one country which can see this through, and if you look back at history, it has to be India, because that's our track record. Whenever we have been challenged, we have done well and we have seen it through. उद्यन, इनफैक्ट आपने अभी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों की बात करी थी, तो उन पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर उन पर आपसे चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस के कारण लगाई गई पूर्णबंदी के चलते मई में 8 मूलभूत ढांचा उद्योगों का उत्पादन 23.4% की गिरावट में रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार फर्टिलाइजर को छोड़कर बाकी सभी 7 क्षेत्रों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, स्टील, सीमेंट और बिजली में मई के दौरान वृद्धि नकारात्मक रही। अप्रैल मई 2020-21 के दौरान इन क्षेत्रों का उत्पादन 30% की गिरावट में रहा। मई 2019 में 8 मूलभूत ढांचा क्षेत्रों में 3.8% की वृद्धि दर्ज हुई थी। सो उद्यन, जैसा अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 3.8% की वृद्धि दर्ज हुई थी मई 2019 में, और मई 2020 में 23.4% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है। लेकिन जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अभी जो सिचुएशन है उसमें सीक्वेंशियली, यानी कि पिछले महीने के मुकाबले क्या प्रोग्रेस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अप्रैल में 37% कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, मई में ये कॉन्ट्रैक्शन गिरकर 23.4% पर आ गई है। क्या आपको ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत लगता है? बिल्कुल सोनू, वो इसलिए कि एकदम से हमने पूरा हमारे सिस्टम को हमने लॉकडाउन किया था, तो धीरे धीरे जैसे जो चीज आपने बेरोजगारी के आंकड़ों में पाया कि बेरोजगारी का दर गिर गया, अभी भी बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, पर उसमें एक कमी आई है क्योंकि कुछ जो उद्यम है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो चालू हो गई। उसी तरीके से देखिए, आपका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियां कई जगह में जो है, आपने कोयले के बारे में बात की थी, आप दूसरी जगह खबरें आई हैं कि कोल इंपोर्ट्स, कोयला का जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है, वो भी गिरा है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जो हमें कोल देते हैं, कोयला देते हैं, उनको भी इफेक्ट हुआ है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये धीरे धीरे करके जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, वो हम इन फिगर्स में सुधार आएगी। पर अगर हम इसको पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो हमेशा हमें बुरा ही लगेगा, क्योंकि वो पिछला जो साल था वो एक नॉर्मल था, और ये वंस इन अ सेंचुरी या वंस इन 50 ईयर्स 60 ईयर्स वाला हिसाब है ये। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें हम सीक्वेंशियली हम वापस मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें पहले ये देखना था कि 50% कैपेसिटी में कब तक पहुंचे, मतलब प्री कोविड, प्री मार्च, और उसके बाद 60, फिर 70, फिर हमें कोशिश करना पड़ेगा कैसे हम उस लेवल पे पहुंचे लॉकडाउन से पहले जहां पे थे। हमारा पहला टारगेट वही होना चाहिए, और धीरे धीरे करके और श्योरली हमें उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। उधर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इन 8 उद्योगों का योगदान 40.27% है। सो आपको लगता है कि आईआईपी फिगर्स भी नरमी की तरफ होंगी, और जैसे जैसे ये हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता जाएगा, हम उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि होगा, पर कुछ वक्त के बाद शायद हम इम्प्रूवमेंट, अभी हमें देखने को मिला नहीं है, थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, और वो दिखेगा, पर वो जिस रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर मंथ ऑन मंथ है, वो धीरे धीरे करके कम होगा, क्योंकि हम जब तक आपके पास क्योर नहीं आ जाता इस इन्फेक्शन का, आप जब तक इसके ऊपर हावी नहीं हो जाते, जो कि हावी होना हम देख रहे हैं दूसरे देशों में भी, तो टोटली कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है वैक्सीन के और टीके के एब्सेंस में। तो जब तक वो आ नहीं जाता, आप पूरी तरीके से वो प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। पर ये होगा कि हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हम कितना पास आ सकते हैं, और ऐसा कोशिश करें कि हमें बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, एक कदम पीछे ना लेना पड़े, जहां पे हैं उससे आगे ही बढ़े, पीछे ना जाना पड़े। तो ये एक चैलेंज रहेगा 7, 8, 9, 10 महीने तक, और उसके बाद जैसे ही हमारे
इंतजाम होते हैं, तब कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जल्दी से जल्दी वापस हम पूरे ग्रोथ पाथ में वापस आ जाए, टोटल ग्रोथ पाथ. Udayan, you mentioned about not taking any steps back, but what will happen if there is a shortage of labor? Then these figures will continue to play a very important role. Yeah. Right, Rajesh, you are absolutely right. But what's going to happen is over a period of time, and that's where what the Prime Minister has said makes a lot of sense. Now, if the infections remain under control, then you can actually allow transportation, whether domestic and international, to happen. Right now, that those things are not, you're not feeling confident that, therefore you're not being able to run as many trains or planes as you want, and or buses as you want. So that, for people to come back and feel confident, you need to get on top of that situation. So that is number one. And that is also the reason, Rajesh, why this the food grain or the food program has been done. Because in the intervening period, people should not, their situation should not slip up so badly that when everything is ready for them to come and participate, they're not being able to participate because things have gone beyond a certain stage. So that is where this support program is so important. So these things have been taken care of, and it is going to be quite frustrating, Rajesh, and I think all of us are encountering that. And there are no easy paths, there's no quick fixes, but the good part is we have done the hard yards already, and we have got used to it. We're getting smarter by the day, we're figuring things out, we're learning more, and then hopefully we should be able to see some of these months that are going to come. Okay, we'll be taking a short commercial break at this point of time. Udayan, stay with us. अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान. मार्केट मंत्रों में आपका फिर स्वागत है. आइए रुक करते हैं शेयर बाजारों का. घरेलू सूचकांक सेंसेक्स आज शुरुआती तेजी गंवाते हुए 46 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ. हालांकि वैश्विक संकेत सकारात्मक थे. बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में दिन में 272 अंकों का उछाल आने के बाद 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में गिरावट आ गई और 0.13% की कुल मंदी से 46 अंक कम होकर 34,916 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.1% कम होकर 10 अंक नीचे 10,302 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था. बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.14% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.75% की गिरावट पर बंद हुआ. Equity benchmark Sensex today surrendered all its early gains to end 46 points lower, even as global cues were positive. After jumping 272 points during the day, the 30-share index Sensex turned negative and settled 46 points or 0.13% down at 34,916, while the NSE Nifty slipped 10 points or 0.10% to 10,302. Broader indices at BSE also logged losses. Mid-cap depreciated 0.14%, while small-cap lost 0.75%. Power Grid was the top laggard in the Sensex pack, shedding around 2%, followed by Sun Pharma, ITC, ONGC, Bharti Airtel and Reliance Industries. On the other hand, Maruti, Nestle India, ICICI Bank and Ultratech Cement were among the gainers. Indian market powered intraday gains as participants adopted a wait-and-watch approach ahead of the Prime Minister's address. Experts said concerns over rising COVID-19 cases and its impact on economic recovery remained a key factor for investors. The number of cases around the world linked to the disease has crossed 1.03 crore and the death toll has topped 5.05 lakhs. While in India, the number of infections spiked to 5,66,840 and the death toll rose to 16,893. Udayan, the IMF has commented that the financial market are not aligned with realities and the financial assets can correct by up to 10%.
The other international agencies have also revised the growth targets, expecting a further cut in growth prospects of the Indian economy due to the painful impact of the strict lockdown. Given the situation that we've been seeing in the last week and now in the first 2 days of this week, what do you think? Where do you think are the markets headed now? Well, Rajesh, there's very little doubt that globally, all over the world, it's nothing to do with just India, but globally, most of the places where the stock markets are sitting or wherever they are, that's primarily been driven by liquidity. All the central banks, governments, etc., have tried to keep the whole system lubricated with excess cash. So yes, a correction is definitely possible whenever you're trying to align the realities of a real economy with the financial economy and things like stock market. Those corrections will keep happening, but the other part also is, Rajesh, is that in the real economy, people are still short on information, to be very honest, because you're not exactly sure how this whole thing is going to pan out. So in the absence of information, you're trying to make a guess, doing guesstimates and trying to figure out, and then based on whatever information you're getting, you're making those investments. So this kind of correction, these kind of corrective actions that are being taken, tactical moves by investors, these will keep happening. Unfortunately, the markets might go through volatile periods. There's not going to be any runaway kind of a growth happening, but a lot of it is because of the steroids that have been administered by the central banks and the governments. उदिन, एक जो इशू काफी डिस्कस हो रहा है आजकल वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, और भारत में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करने का वो प्रोडक्ट्स जो खासकर चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे, चाहे वो इनपुट्स हों या चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हों, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, आपको क्या लगता है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन से सेक्टर्स पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए सोनू, इसमें जो कैपेसिटी है, कुछ चीजें जो हैं वो तो आप फटाफट कर सकते हैं। जैसे हमने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में, ठीक है, मास्क एंड जो सूट्स हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स, वहां पे तो फटाफट हो जाता है। पर कई चीजें हैं जहां पे आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा वो कैपेसिटी बनाने में, और ये हम अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, आपको कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ेगा। मान लीजिए आप इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट करने के बाद जो आप लागत आ रही थी उससे 10% आदमी एक्स्ट्रा दे सकता है, 15% दे सकता है, पहले तो 30-40% एक्स्ट्रा होता है। तो फिर वो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो कारगर नहीं बनती है। फिर कोई किसी और देश से आप ले रहे हो, फिर वही प्रॉब्लम रह जाती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, ये सिर्फ एक प्राइड वाली बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बात है कि आपके अगर देश में बन जाता है तो वो आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करता है, आपके देश में के लोगों को रोजगार मिलता है, और ये एक जो हमने ग्लोबल सप्लाई चेन बना रखी थी, उस सिस्टम की एक कमी निकल आई है इस कोविड पैंडेमिक में। तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए दवाइयां हैं, कुछ खास आपकी प्रोडक्शन है टेलीकम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, वहां पे अगर ग्लोबल सप्लाई चेन एफिशिएंट तो है पर वो रेजिलियंट नहीं है। तो एफिशिएंसी और रेजिलियंस जो स्ट्रेंथ होती है, जो अगर आपको क्राइसिस आ जाती है उसमें उसको अब्सॉर्ब कर सके, उसकी एक रिक्वायरमेंट सामने आ रही है। तो इसमें ये जो कैपेसिटी है, कुछ कैपेसिटीज जो है फटाफट बन सकती है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर है, पर जहाँ पे हार्ड मशीनरी है वहां भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 3 से 4 साल लग सकते हैं। पर ये एफर्ट वर्थ द वाइल है, क्योंकि हमने ये सबक सीखा है और इस सबक से हमें एक्ट करना है। आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशिया के उभरते शेयर बाजारों में आज तेजी रही। इस तेजी को बढ़ावा चीन में विनिर्माण गतिविधि उत्साहजनक रहने से मिला, जिससे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार के लिए कुछ आशा पैदा हो गई। हालांकि अमेरिकी डॉलर ने सामान्य मजबूती से क्षेत्रीय मुद्राओं पर दबाव बना रहा। आंकड़ों से आज पता लगा कि चीन में फैक्ट्री गतिविधि जून के दौरान अधिक तेज गति से बढ़ी। सरकार द्वारा कड़ी पूर्णबंदी हटाने और निवेश को बढ़ावा देने के
बाद फैक्ट्री उत्पादन में ये तेजी आई। हालांकि विश्लेषकों ने एशियाई बाजारों में शेयरों में मजबूती के प्रति सतर्कता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में तेजी और अमेरिका और चीन के बीच तनाव से जुड़ी चिंताएं बाजार के लिए अभी भी खतरा बनी हुई हैं। चीन के संसद ने हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित कर दिया है, जिससे पेइचिंग को वित्तीय केंद्र हांगकांग पर अधिक नियंत्रण मिलेगा। इस कानून पर ब्यौरा आज जारी होगा। प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिका ने अमेरिकी कानून के अंतर्गत हांगकांग को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दर्जे से हांगकांग को कई ऐसे फायदे मिलते हैं जो चीन को प्राप्त नहीं है। आज जापान का निक्केई सूचकांक 1.3% की तेजी में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.7% बढ़कर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.6% की तेजी दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% की बढ़त में रहा और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% की वृद्धि पर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख मिला जुला था। लंदन का फुटसी 0.4% की गिरावट पर था। फ्रांस का कैक 0.2% और जर्मनी का डैक्स 0.4% की तेजी पर थे। Wall Street's main indices rose yesterday following a sharp sell-off last week as investors clung to hopes of a stimulus-backed economic rebound even as coronavirus cases surged. On the other hand, a jump in Boeing shares boosted the blue-chip Dow. Boeing rose 6.4% after the Federal Aviation Administration's certification for the grounded 737 MAX. A spike in virus infections in southern and western states last week spooked the U.S. markets. The Dow Jones gained 2.3%, the S&P 500 climbed 1.5%, and the Nasdaq Composite climbed 1.2%. Then, in China, on the one hand, we're talking about the manufacturing activity that offered some hope for a recovery, and on the other hand, we're looking at another tussle, perhaps, between the United States in response beginning to eliminate Hong Kong's special status. Oh, absolutely, Rajesh. That tussle is going nowhere. And remember, this is an election year in the U.S. and China is pretty much there at it's a number one agenda, if not number two. So it will be apart from the pandemic handling, China will be a key issue, and you expect more action, more countermeasures. So it's going to be a pretty, the headlines. We know what kind of headlines is going to be there for the next 6 months or so. आइए चले करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत होकर 75 रुपए 51 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपए का कारोबार सीमित दायरे में हुआ। विदेशी फंडों का प्रवाह और कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंताओं का दबाव निवेशकों की धारणा पर पड़ा। हालांकि घरेलू शेयर बाजारों में स्थिरता से ये गिरावट नियंत्रित हो गई। Oil prices today slipped amid rising COVID-19 cases and a possible return of Libyan oil production, which has been down to a trickle since the start of the year. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $41.20 per barrel, while WTI crude prices were at $39.30 per barrel. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोना अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़त के अनुरूप 119 रुपए महंगा होकर 49,306 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 1,408 रुपए महंगी होकर 49,483 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,773 प्रति आउंस पर था और चांदी $17.86 प्रति आउंस पर थी। ब्रीफली आपको लगता है कि जो तेल है उसमें ये 40-41 का लेवल ही बना रहेगा? बहुत ब्रीफली। ये बिल्कुल ही ऐसे ही लग रहा है और वो अनलेस आपका फिर कोई और डिस्ट्रप्शन आ जाती है, मुझे लगता है इसी लेवल पे वो रखने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन। थैंक यू उद्यन। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi announces extension of the PM Garib Kalyan Ann Yojana till the end of November. Around 80 crore people to get free ration in the wake of COVID-19 pandemic. The output of 8 core infrastructure industries shrink by 23.4% in May due to the lockdown, and domestic equity benchmarks log marginal losses even as global cues were positive. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.